जय श्री परमात्मा ने नमः। आज तृतीय अध्याय गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मण अस्ते मतां बुद्धिर्जनार्दन तत्किलं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया धना ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारंभा अन्यैष्कर्मं पुरुषो यश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्म कृता कार्यते व्यवसा कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थः विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्वतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगं शक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म तव कर्म जायो हे कर्मणा शरीर यात्रा पिचैतेन सिद्धिध्ये कर्मणा यज्ञार्थात् कर्मण्यो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसंगा समाचरा। सह यज्ञा पृष्ठा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रविश्यध्वमेश वोयस्त्विष्ट कामधुका देवान् भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं हि भावयन्ता श्रेयः परं वा यस्था इष्टान् भोगान् निबोधे वा दास्यन्ते यज्ञभाविता तेर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ति इष्टेन एव स यज्ञशिष्टाशिणा सन्तो मुच्यते सर्वकिल्बिषे युञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्वि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्ति स अगारुन्द्रिया रामाओ मोघम पार्थ सजीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात् तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्ट इस्तस्य कार्यं न विद्यते नैवं सिद्ध नेवः तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवापश्रिया तस्माद् शक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो व्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कृतमहर्षि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्तरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं तेषु त्रिषु लोकेषु किंचन नाना व्याप्तं व्याप्तव्यं वर्त एवं च कर्मणि यदि व्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीन्द्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा उत्सिदेयुः रिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ताशाम् पन्याहि मां प्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांसक्तिश्चि कीर्षु लोक संग्रहं बुद्धिवेदं जनये अदज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वा अनियुक्त समाचरण प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहिमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदौ मद्दान् कृत्स्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगताज्वरा ये मे मतमिदं नित्यमनु
तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढास्तान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहा किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तियोर्णवस्मागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावहः। अथ केन अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्यपि वर्णे वाश्रणे बलादिवा वियोजिता। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनिमिहि वेरिणिम् तुम्हें न प्रियते वन्नीर यथादृशो मलेन च यथोन्बेलेन माव्रतो गर्भ स्तता तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमयि तेने ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येषा ज्ञानमावृत देहिनाम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभा पापमानं प्रजह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रिये परमम मनः मनसस्तु परं बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परमं बुद्धत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीयो अध्याय। 3 अध्याय पूर्ण हो गए। मेरे भाइयों बहनों, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। सुनते रहिए, लाइक करते रहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम।